Hello everyone, good evening, welcome to the class. How are you all? And how's everything going? Okay, let me just check if I'm live and audible and visible to you all. Okay, yes, I guess I am live. And please do let me know in the comment section if I'm audible and visible to you. Ah, yes. Everything good? Hi Ayush, good evening. How are you? How's preparation going? Okay, just give me a minute. So आज के सेशन में we are going to डिस्कस स्ट्रेंथिंग एंड वीकनिंग स्टेटमेंट्स को ऐसे सॉल्व करते हैं. ठीक है, एज आई टोल्ड यू, आई थिंक इन द लास्ट सेशन ओनली, इन विच आई हैव डिस्कस्ड हाउ टू फाइंड assumptions, राइट. हमने assumptions डिस्कस किया था, उस पर एक छोटे से क्वेश्चन भी किया था. एंड आई प्रॉमिस्ड यू कि ऐसी छोटी छोटी क्लासेस की सीरीज आई विल बी ब्रिंगिंग अपॉन, राइट. सो इन दिस सीरीज टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग क्वेश्चंस. ठीक है, चलो शुरू करते हैं. सो कमिंग विथ फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कर लेंगे क्या क्या स्ट्रेंथिंग एंड वीकनिंग है क्या. ओके, और उस पर एक दो छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लेंगे सो दैट आपका कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाए. ओके, सो मूविंग हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल let's understand what is this strengthening the argument. Okay, so when we talk about strengthening the argument, remember, strengthening means that you are trying to prove your argument to be correct. ठीक है, strengthening का मतलब होता है प्लस करना in total. ठीक है, strengthening mean only प्लस करना, मतलब अपने argument को और ज्यादा strength provide करना. Now how do you provide strength to anything? करेक्ट, अगर आपको strengthen करना है इसका मतलब आपको support करना होगा. Strengthening basically means support. ओके, स्ट्रेंथिंग का मतलब ही क्या होता है? सपोर्ट प्रोवाइड करना. और ऑब्वियस बात है, अगर आपको किसी बात को स्ट्रेंथन करना है, सो दैट मीन्स यू नीड टू प्रोवाइड सपोर्ट. आई ऑलवेज से, लाइक व्हेनेवर यू सॉल्विंग स्ट्रेंथिंग आर्गुमेंट ना, तो आप ऐसा सोचा करो, like suppose you have said one statement, okay, and you are trying to just make it more concrete. Okay, you are having an argument with your friend, family, anyone, and you're just trying to prove your statement to be more concrete, then that is where strengthening the argument works. Okay, like for example, like let's first understand and I'll explain you with examples also. First of all, you need to understand what is premise and conclusion, because obviously premise is supporting statement, okay, and conclusion, obviously this is what you need to strengthen. Like if I say tobacco should be banned from India as it is causing cancer. Okay. Now, how would you strengthen this argument? You can strengthen this argument by saying that every year 10% of the males that die due to cancer are consuming tobacco. Okay, so obviously this is strengthening my point कि हाँ, tobacco is dangerous for health. Correct, right? So first of all, you need to understand and ask yourself what would make the conclusion more valid. Obviously, if I'm saying that tobacco is not good for health, it should be banned, then obviously if I'm saying that yes, more major of the cancer patients are suffering because they are consuming tobacco every year, so this obviously makes my conclusion more valid, right? Correct. So this is how strengthening the argument works. Strengthening means you need to provide more evidence to the conclusion. इसमें दो तीन चीजें बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है. Like for example, first thing, it should not start with a new topic. आप जो भी argument को prove करने के लिए, strengthen करने के लिए points दे रहे हो, it should not start a new topic. पहली चीज. Secondly, it should not bring in any new information. Statement जो होता है वो new होता है, ठीक है, अगर वो ऑब्वियस बात है सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, बट वो कोई नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करना चाहिए. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट टोबैको एंड कैंसर, इट शुड नॉट स्टार्ट टॉकिंग अबाउट एड्स, और इट शुड नॉट स्टार्ट टॉकिंग अबाउट एनी अदर हेल्थ डिजीज. अंडरस्टूड. सो आपको ऐसे स्टेटमेंट्स लाने हैं जो हेल्थ रिलेटेड हो, टोबैको रिलेटेड हो. आप उसमें एल्कोहल कंजम्पशन के बारे में बात नहीं करोगे. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट टोबैको एंड
lungs or cancer or whatever, the statement should not start talking about what? Alcohol. Understood? It should not start talking about alcohol. It should keep talking about tobacco only. Okay. So you need to provide for external information. ये याद रखना, supporting या फिर weakening statements में, strengthening weakening दोनों में external information provided होते हैं. It's not from the passage only that you take out supporting statements or you take out weakening statements. These are external information, but they should not be extremely out of the context. They should not bring out a new topic. Okay, and they should be in accordance with the argument. Okay, just like for example, if I'm talking about we should save trees, so we should not say that okay, we should end taking examinations because examinations papers are made from trees. Okay, and therefore if we ban examinations we can save trees. ये बहुत लंबा connection हो जाएगा. Are you getting my point? This is how it works. तो डायरेक्ट कंक्लूजन पे पहुंचने वाले स्टेटमेंट्स होने चाहिए, इनडायरेक्टली घूम घूम कर पहुंचने वाले नहीं होने चाहिए. न्यू स्टेटमेंट्स नहीं लेकर के आओगे. न्यू स्टेटमेंट्स कहने का मतलब क्या? एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन होना चाहिए, बट इट शुड नॉट बी ब्रिंग अ न्यू टॉपिक. लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अल्कोहल, सॉरी, टोबैको इन द एग्जाम्पल, आई शुड नॉट सडनली स्टार्ट टॉकिंग अबाउट अल्कोहल. अंडरस्टूड? आई बात समझ में? ठीक है. देन यू नीड टू एलिमिनेट चॉइसेस दैट आर इररेलेवेंट. आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू. न्यूट्रल. ओके, neutral means neither it is supporting, neither it is weakening. Understood? You should not go for neutral statements. Understood? Or news. I already told you, something which brings in a new topic should not be considered. Okay, so they neither strengthen nor weaken the argument. Clear? The correct option should add credibility to the reasoning. Obviously if I'm saying that tobacco should be banned, तो उसके पीछे आपको ऐसा credible reasoning देना होगा that the स्टेटमेंट इज बीइंग कन्विंस्ड बाय द पर्सन. अंडरस्टूड? आपको कन्विंस करने की कोशिश करनी है इन टोटल. एम आई क्लियर? यस और नो? समझ में आ गया स्ट्रेंथिंग? क्या करना है आपको? एविडेंस फाइंड करना है. ठीक है. प्रेमाइस, सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स ढूंढ लो, कंक्लूजन ढूंढ लो. ये याद रखो कि स्ट्रेंथिंग स्टेटमेंट्स आपको एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन से ही मिलेंगे. ठीक है, जो कि प्रेमाइस को सपोर्ट करेंगे. प्रेमाइस मतलब सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स को और सपोर्ट करेंगे. ठीक है, या फिर आपके मन में जो भी डाउट होगा, पोटेंशियल डाउट थोड़ा भी होगा कि ये स्टेप सही है या नहीं है, लाइक टोबैको को बैन करना सही है या नहीं है, स्टेटमेंट को और आपको क्लियर करने में हेल्प करें. ठीक है. तीसरी चीज, दे शुड नॉट स्टार्ट अ न्यू टॉपिक. ओके, दे शुड नॉट बी वेरी न्यूट्रल or irrelevant to the topic. Understood? And moreover, you need to think that they should add credibility to your reasoning. Clear? Hai? Okay. So this is how strengthening the argument works. Now let's solve some questions also. Okay. And also one thing more. If you are liking the CR class, you can also join our crash course. क्योंकि मुझे पता है लास्ट मोमेंट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है इन CR सेक्शन ओनली. ठीक है, तो CR का सेपरेट 12 minutes to CLAT पर ऑप्शन आपको मिल जाएगा. You can visit our website and also use my code AJ12 to get flat 12% discount. Also इंडिविजुअल सब्जेक्ट का क्लास मिल जाएगा, तो that will help you in your CR preparation. Okay, चलो आगे बढ़ते हैं. So first question. Recent studies have shown that prolonged exposure to air pollution significantly increases the risk of respiratory disease such as asthma, bronchitis, and even lung cancer. Urban areas, especially in developing countries, see a substantial rise in this health condition due to high pollution levels from vehicles, industries, and construction activities. Given the clear link between pollution and respiratory illness, cities should prioritize reducing air pollution to improve overall public health. क्या आर्ग्यूमेंट है मेरा? कि सिटीज को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, किस चीज को रिड्यूस करना? एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करना, सो दैट दे कैन इंप्रूव ओवरऑल पब्लिक हेल्थ. Right? Now tell me what will be the solution for this. Which of the following, if true, would most strengthen the argument that reducing air pollution should be a priority for public health? मैंने बिना यहाँ नीचे आर्ग्यूमेंट पढ़े भी आपको पैराग्राफ पढ़ के भी आर्ग्यूमेंट बता दिया. आर्ग्यूमेंट क्या है? कि we should start prioritize reducing air pollution to improve overall public health. Now tell me A, B, C, D में से क्या आंसर इसका करेक्ट होना चाहिए? Okay, come on, start. Ishan says A. Okay. Rest of you, come on, answer. Countries that have successfully implemented air pollution control measures have seen a marked decline in respiratory disease cases. Respiratory disease can also be influenced by genetic predisposition and lifestyle factors like smoking. Air quality tends to improve naturally in areas with lower population density. Implementing air pollution control measures have shown minimal improvement in reducing cardiovascular disease.
Okay, so Ishan, Divyansh, everyone has answered A, and that is very correct. Very good. A is the correct answer, obviously. Elimination was very easy here. See, respiratory disease can also be influenced by genetic predisposition. Were we talking about genetic predisposition? No. It's again a new topic being discussed. मैंने पहले ही बोल दिया new topic कोई भी आएगा तो आप उसको cancel out कर दोगे, right? Air quality tends to improve naturally. This is general statement only, right? This option B and C have alternative causes. ठीक है, ये भी alternative causes आ गया, ये भी population density नया है, नो रिलेशन, राइट. एंड अगर डी की बात करें तो डी तो आर्ग्यूमेंट को वीकेंड कर रहा है कि इंप्लीमेंट करेंगे अगर एयर पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स को तो उसके वजह से मिनिमल इंप्रूवमेंट आएगा. सो ऑब्वियसली दिस इज व्हाट, दिस इज weakening argument, not strengthening argument. So this is also again eliminated. So the correct answer goes for A only. Next question. Studies reveal that urban green spaces, such as parks and recreational areas, play a vital role in enhancing the mental and physical health of city residents. These spaces offer opportunities for relaxation, physical activity, and social interactions, all of us. All of which reduce stress and contribute to overall well-being. With the rapid urbanization of cities, it is essential for urban planners to allocate more areas for green spaces to foster a healthier and more balanced urban life. तो मुझे बताओ which of the following if true would most strengthen the recommendation for increased green spaces in cities. बताओ जल्दी से. Parks and green space in cities tend to attract a wide range of visitors from different age groups. A study found that cities with more green spaces experience lower healthcare costs related to stress-induced illness. Urbanization tends to indicate that city populations are likely to continue growing over the next decade. The development of green spaces in cities often results in higher property values in surrounding areas. Come on. Very good. Very much impressed. The correct answer obviously here is B. A study found that cities with more green spaces experience lower healthcare costs related to stress-induced illness. Obviously, A nahi hoga because we are not here talking about that it's wide range of visitors attract hote ya nahi. We are talking here about healthier, more balanced urban life, right? So the option A is obviously not talking about any of these. Urbanization tends to indicate that city populations are likely to continue growing over the next decade. This is again no having no relation. This is just a general statement having no relation with it. Okay. And development of green space in cities often results in higher property. Again, it is a new statement और ये weakening argument है. करेक्ट कि हमें नहीं करना चाहिए. सो ऑब्वियसली वी नीड टू गो फॉर स्ट्रेनिंग एंड बी गोस फॉर द परफेक्ट आंसर. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन. Research increasingly supports that children who attend quality preschool programs show better academic performance, social skills, and adaptability in later areas. These early educational experiences are especially beneficial for children from underprivileged backgrounds, helping close the educational gap. Thus, expanding access to high quality preschool education is essential for fostering long term societal progress and addressing inequalities in educational opportunities. तो आपका बेसिक आर्ग्यूमेंट क्या है? ये आपको एक्सपैंड करना है एक्सेस टू क्वालिटी प्री स्कूल एजुकेशन, मतलब प्री स्कूल एजुकेशन को अच्छे से प्रोवाइड करना है, राइट? नाउ टेल मी व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर. First is countries that have invested in preschool programs for low income families report higher high school graduation rates. Many children in underprivileged communities lack access to quality preschool programs due to financial constraints. Early childhood education programs are associated with increased enrollment in extracurricular activities in later years. Some studies show no significant difference in test scores between preschool attendees and non-attendees in early primary school years. सबका आंसर है ये. Okay, some of you have answered B also, but the correct answer obviously is A. Option B क्यों नहीं होगा? बिकॉज ऑप्शन बी इज हाईलाइटिंग अ चैलेंज. ये तो आपको चैलेंज बता रहा है कि अंडर प्रिविलेज कम्युनिटीज के पास फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट है, इसके वजह से दे आर नॉट एबल टू अटेंड द स्कूल. सी इज ऑब्वियसली नॉट करेक्ट बिकॉज ये दिस इज अगेन स्टार्टिंग अप अ न्यू टॉपिक. Was the passage talking about extracurricular activities? No, it was not talking about extracurricular activities, right? It was not at all talking about extracurricular activities. Therefore, the correct answer obviously is A. Understood? Chalo, next.
लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम स्ट्रेंथिंग, उसके बाद वीकनिंग आर्ग्यूमेंट पे चलेंगे. ओके, क्लियर है? व्हाई नॉट सी, व्हाई नॉट बी, व्हाई द आंसर वाज ए. नेक्स्ट. With climate change posing an unprecedented threat, shifting to renewable energy sources like solar and wind power has become essential. Renewable energy not only reduces greenhouse gas emissions but also lowers our dependence on depleting fossil fuels. As renewable energy technologies became more efficient and cost effective, it is imperative that governments worldwide promote and invest in these energy sources. Which of the following, if true, would most strengthen the case for government investment in renewable energy? चलो बताओ. करेक्ट एवरीवन, वेरी गुड. ए अगेन. बी क्यों नहीं होगा इसका आंसर? बिकॉज ये तो वीकनिंग आर्ग्यूमेंट है. ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी स्टिल फेस चैलेंजेस सच एज एनर्जी स्टोरेज, ये भी अगेन वीकनिंग आर्ग्यूमेंट है. Renewable energy sources generally have smaller environmental impact compared to fossil fuels. This is again a statement that is restated statement. So D is obviously not the correct answer. Therefore, A is the correct answer. Next, चलो. सो स्ट्रेंथिंग समझ में आ गई. स्ट्रेंथिंग में क्या करना है? एनी न्यू आर्ग्यूमेंट जो नया टॉपिक शुरू कर दे उसे डिलीट कर देना है. ठीक है, यू नीड टू सी कि प्रेमाइज को कौन सा बात स्ट्रेंथन कर रहा है. राइट, यू नीड टू फॉलो ऑन टू द कंक्लूजन ऑल्सो, दैट प्रेमाइज एंड द कंक्लूजन इज मोर वैलिडेटेड विथ योर स्टेटमेंट. राइट, एंड यू टू थिंक लाइक फॉर एग्जाम्पल यू आर जस्ट कंक्रीटिंग व्हाट यू हैव सेड. ट्राई टू कंक्रीट इट, कि आपको और स्ट्रॉन्ग करना है अपना ओपिनियन वट एवर यू हैव सेड. अंडरस्टूड? The strengthening arguments are explicitly taken outside from. There are some information which is not given in the paragraph, but they should not start with new topic of discussion. Understood? वो statements कुछ नए हो सकते हैं, but they should not start new topic of discussion. Clear? Understood है? Now coming for weakening. Weakening में just think opposite. You need to find the evidence that will undermine the argument. कमजोर करेगा. You need to think like someone has given you an argument and you are giving counter argument in order to प्रूव इट रॉन्ग. तो आपको कोई चीज को गलत प्रूव करना है. ठीक है, तो पहले तो आपको समझना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा प्रेमाइस और कंक्लूजन को. ठीक है, फिर आपको देखना होगा क्या वीकन करता है रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेमाइस एंड कंक्लूजन को. अंडरस्टूड? व्हाट वुड वीकन द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेमाइस एंड कंक्लूजन. ठीक है, फिर आपको एक, अभी मैंने जैसे स्ट्रेंथन के लिए बताया था, सेम यू नीड टू लुक ऑन फॉर द स्टेटमेंट्स दैट वुड वीकन द रिलेशनशिप. Okay, and then you need to check upon the answer that introduces doubt or presents an alternative explanation. Okay, look for an answer that introduces doubt, because you're weakening. In strengthening you were trying to remove the doubt, right? But here you will try to find statements which are introducing doubt or providing an alternative. Like for example, if I say, like same example, that tobacco should be banned because it is injurious for health, okay, or it is damaging for health. Now what would weaken it? If I'll say that if we ban tobacco, the GDP or the income of government will be much more affected. Okay, एंड दिस अगेन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट कि अगर हमने टोबैको बैन कर दिया तो गवर्नमेंट की इनकम बहुत कम हो जाएगी एंड इट विल ऑब्वियसली इफेक्ट द प्रोग्रेस दैट इज गोइंग ऑन इन आवर कंट्री. करेक्ट? सो दिस इज हाउ वी आर वीकनिंग, बिकॉज मैंने कंक्लूजन को इनवैलिडेट कर दिया कि हमें टोबैको को बैन नहीं करना चाहिए. अंडरस्टूड? Eliminate choices obviously that strengthen or have no effect on the argument and are starting again with a new topic. Weakening में भी कोई अगर statement नया topic शुरू कर रहा है, you will not talk about it. Understood? No, premise doesn't mean, premise means supporting statements. Premise doesn't mean argument. Premise means supporting statements. Understood? जो बातों को support करता है. Okay? The correct answer will expose a flaw or counter example. I already told you that shows the conclusion is not necessarily true. Like मैंने अभी example दे दिया, counter argument दे दिया कि tobacco ban करने से क्या होगा, हमारी income को या गवर्नमेंट की इनकम को बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, जिससे सक्सेस रेट बहुत कम हो जाएगा. डेवलपमेंट रेट विल गो डाउन. सो दिस इज हाउ वीकनिंग एन आर्गुमेंट इज सॉल्व. एम आई क्लियर? क्लियर? चलो, नाउ कमिंग ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन. Electric vehicles produce zero
tailpipe emissions, which significantly reduces air pollution in cities. With fewer cars burning fossil fuels, adapting EVs on a large scale could greatly improve urban air quality and reduce respiratory issues associated with air pollution. Okay. So, which of the following, if true, would most weaken the argument that adopting EVs on a large scale will significantly improve urban air quality? चलो जल्दी से बता दो. ऐसा आर्ग्यूमेंट बताओ जो वीकेंड करे इस बात को कि दैट इज अडॉप्टिंग ईवीज ऑन अ लार्ज स्केल विल सिग्निफिकेंटली इंप्रूव अर्बन एयर क्वालिटी. मींस यू नीड टू प्रूव दैट इट विल नॉट इंप्रूव अर्बन एयर क्वालिटी. आई बात समझ में कि ईवीज को लाने से कोई खास फायदा नहीं होगा. आपको ये बात को प्रूव करना है. नाउ टेल मी व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर. Okay, people saying A, people saying B. EV batteries require rare metals which can lead to environmental degradation in areas where they are mined. Manufacturing EVs produces substantial greenhouse gas emissions, offsetting some of the benefits of zero tailpipe emissions. Many EV owners also own gasoline powered vehicles, using them for long trips where charging infrastructure is limited. Urban areas that have adopted EVs report lower levels of certain pollutants, but an increase in others, such as particulate matter from tire and brake wear. बताओ. देखो, तुम्हें वीकेंड करना था आर्ग्यूमेंट को, करेक्ट, राइट. एन आर्ग्यूमेंट वीकेंड करने के लिए ऑब्वियसली यू नीड टू चेक अपॉन द स्टेटमेंट. स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ईवीज को लार्ज स्केल पे अगर हम लाते हैं, ठीक है, तो उससे अर्बन एयर क्वालिटी इंप्रूव होती है. ठीक है, आपको इस बात को गलत प्रूव करना है दैट ईवी लाने से कुछ खास फायदा नहीं होगा. Now, if I talk about option A, it is introducing an environmental concern, right? But doesn't talk about directly impacting urban air quality. तो ये हो गया नया टॉपिक. सो ए तो बिल्कुल गलत आंसर है. ठीक है. बी की अगर बात करें तो बी सजेस्ट आर trade off in emissions, right? But it is again not directly related to the improvement in cities, correct? आपको improvement in cities से deal करना है. So B is again not the correct answer. The correct answer here is D, because it is directly talking about urban air quality. That urban air quality में क्या reasoning आती है? Lower level of certain pollutants आते हैं, लेकिन particulate matter बढ़ जाता है from tire and brake wear. सिंपल इजी. आपको डायरेक्ट प्रॉब्लम को टैकल करना है. अंडरस्टूड. द प्रॉब्लम हियर इज टॉकिंग अबाउट अर्बन एयर क्वालिटी, सो यू नीड टू टैकल दैट ओनली डायरेक्टली. क्लियर? So A is also wrong, B is also wrong. The correct answer is D. Okay. C obviously points out to a behavioral potential, right? But doesn't undermine the core claim that EV is improving air quality in urban areas. So therefore, the correct answer. Obviously, but if it does tell me, then was EV batteries require rare metals mentioned? No. I already told you, नया टॉपिक नहीं आना चाहिए. ईवी से रिलेटेड आए तो चलेगा. अंडरस्टूड. ईवी से रिलेटेड आए तो चलेगा. नया इंफॉर्मेशन आ सकता है, न्यू टॉपिक नहीं आना चाहिए. यही गड़बड़ आप लोग करते हो. अंडरस्टूड. अगर ईवी के बारे में बात करते करते इफ आई वुड हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट सीएनजी तो ये गड़बड़ होता, बिकॉज ईवी से हम लोग रिलेटेड बात करते, सीएनजी नहीं. अंडरस्टूड. तो इफ इट इज द टॉपिक इज रिलेटेड टू ईवी देन इट इज फाइन. But if I would start talking about CNG, then it would introduce a new information. Am I clear? Understood? Riri, am I clear with it? Yes? Next question. Many studies suggest that remote work increases employee productivity by reducing commute times, providing a comfortable environment, and offering greater flexibility. With fewer distractions from office environment, remote work is generally beneficial for employees' focus and output. The argument is that remote work generally improves employee productivity. You need to weaken it that remote work not improve employee productivity. आपको ये prove करना है. Now tell me what will be the correct answer. Come on, come on, come on. Tell me first. Very good, everyone. Very good. The correct answer obviously is A, because it is directly addressing the problem of improving employee productivity, right? B is not the correct answer because it is a strengthening argument. कि वो स्ट्रेस लेवल को reduce करता है. ये strengthening argument है. आपको weaken करना था इस बात को. B is again strengthening argument.
C obviously is not correct because it is talking about lower cost related to maintaining physical office. But आपका problem physical office का cost नहीं था. Understood? Your problem was benefits for employees, focus and output. Understood? Therefore, A is the correct answer. Clear? Understood? Next question. Local organic farming minimizes the environmental impact of long distance transportation, known as food miles, and reduces reliance on chemical pesticides. By supporting local organic farmers, communities can promote a more sustainable food system and help combat climate change. Which of the following, if true, would most weaken the argument that local organic farming significantly combats climate change? कि लोकल ऑर्गेनिक फार्मिंग से क्लाइमेट चेंज कॉम्बैट नहीं होता. आपको इस बात को प्रूव करना है. जिस नगेट कर दो और उसको प्रूव करने की कोशिश करो. वेरी सिंपल अबाउट वीकनिंग स्टेटमेंट्स. अंडरस्टूड? चलो जल्दी से बता दो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर. कम ऑन. Come on, people have started answering. Okay, Anshu says A, Shan says A, Ayush also says A. Any other answer? Very good, people. Very good. The correct answer obviously is A. That study shows that organic farms generally have lower yields than conventional farms, reducing more land to produce the same amount of food. Very good. Keep it up. So I hope this has made it all clear regarding your strengthening weakening statements. मैंने छोटे क्वेश्चन इसलिए सॉल्व करा है बिकॉज कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो इट गेट्स बेटर फॉर यू, राइट? इफ यू हैव क्लियर कॉन्सेप्ट तो आप अब जाके पैसेज में करोगे तो चीजें याद रखना, राइट? व्हाट it is external information, right, relating to the topic only. It doesn't start a new topic or new piece of information. Understood? कोई नया टॉपिक शुरू नहीं होना चाहिए, ठीक है? इट शुड नॉट बी ओवर एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट. ओके, इट शुड बी ट्रू इन नेचर और आपके कंक्लूजन को वैलिडेट करना चाहिए. एम आई क्लियर? अंडरस्टूड मैम? व्हाई नॉट बी? लोकल ऑर्गेनिक फार्मर्स यूज अल्टरनेटिव पेस्ट कंट्रोल मेथड्स दैट हैव स्मॉलर एनवायरमेंटल फुटप्रिंट than conventional pesticides. Local organic use alternative pest control methods. यहाँ पे pest control method के बारे में कहाँ बात हुई है? I'm talking here about what? Local organic farming. तो local organic farmers alternative pest control method use करते हैं जिसका smaller environmental footprint होता है, जबकि आपको ऐसे भी combat क्लाइमेट चेंज को खराब करने के बारे में बात करनी है. अंडरस्टूड? ऑप्शन बी सस्टेनेबिलिटी को क्लेम कर रहा है. एम आई क्लियर? ये सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात कर रहा है, ये कन्वेंशनल नहीं है. बट अभी वो कन्वेंशन के बारे में बात नहीं करनी थी. आपको सिंपल ये प्रूव करना था कि ऑर्गेनिक फार्म्स जनरली क्या करते हैं, लोअर यील्ड्स देते हैं कन्वेंशनल फार्म्स के मुताबिक, सॉरी कंपैरिजन में. ओके, जिसकी वजह से दैट रिक्वायर्स मोर लैंड टू प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ फूड. आपको सिंपल सी चीज ये बतानी थी कि क्लाइमेट चेंज को हम लोग कैसे कॉम्बैट कर सकते हैं. अंडरस्टूड? दैट्स व्हाई नॉट बी, बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट अल्टरनेटिव पेस्ट दैट हैव स्मॉलर एनवायरमेंटल फुटप्रिंट. पहली बात तो इट इज टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबिलिटी. एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? अंडरस्टूड है? ओके, सो नेक्स्ट वीक अगेन आई विल बी बैक विथ अ न्यू टॉपिक. तुम लोग बता दो जल्दी से कमेंट सेक्शन में विच टॉपिक डू यू वांट टू डिस्कस. लाइक हमने assumptions कर लिए, स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग कर लिए. नाउ चूज अ टॉपिक फ्रॉम क्रिटिकल रीजनिंग दैट यू वांट मी टू डिस्कस एंड ब्रिंग क्वेश्चंस अपॉन. मैं वही क्वेश्चंस लेकर के तुम लोगों के लिए आऊंगी. सो नाउ डू लेट मी नो so that I can come and solve your problems. Till then, all the best. Keep watching, keep studying. Take care. Bye bye.